I've already choked twice looking at this film, and it just never goes old for me. So 13 years later, is the gold getting a bit old for you, Abhinav? How has the sport moved? I know it's a sweeping question. Well, the very fact that you're opening the India Today Conclave with a session on Olympic sport tells me that we've made progress. The very fact that you've invited me back for something I did 13 summers ago tells me our progress has been slow, at least for my liking. But having said that, I think there has been a great evolution in the last decade of the Indian athlete. I grew up in an era where we were a defensive lot. I was personally a darpok. The Indian athlete of today is fearless. The Indian athlete of today has the self-belief that I never did. And I could go on and say that a lot of my teammates never did. But I think there's a big change also in the environment that surrounds Indian sport. You know, when we used to travel to the Olympic Games, we were written off even before we boarded the flight to the Olympic Games. Now a red carpet is rolled out in our send-off of our teams to the Olympic Games, and there's a great warm welcome, whether you lose or whether you win, even when you come back. I think support to at least elite athletes is being made available more than ever. I think the Indian athlete of today has the sort of resources and support that no other athlete in the world enjoys at the elite level. But of course, I made many points 13 years ago as well, and I think many points still remain relevant to the day, and we still need to make progress in many fronts. But I think the next decade or so will be a decade for sport in India. We are such a young country. Sport is being consumed much more by people. You know, more people are playing sport, more people are watching sport. So sport is slowly but surely becoming a priority for all stakeholders. It is important to governments. It's important for you all. Given the fact you have 4 sessions on Olympic sport at this very conclave, tells me that the audience is interested in hearing about Olympic sport. On a personal level, you know, it's been 13 years, and now that I've exited my investment of sorts, I can look back at my career far more dispassionately. And I don't really look back at my career at those medals that I won, which hang on a wall. But I really look back at my career at the relationships that I was able to build with people, with my mom and my dad, for example, with my coaches, with my larger entourage, for example. And basically the sort of person I became in the process of winning that gold medal. Sport taught me a lot of things. It taught me a little bit about winning, but sport taught me how to lose. It taught me honesty, it taught me integrity, it taught me how to set a goal, it taught me how to deal with conflict, it taught me a lot about respect, about respecting others and finding my own self-respect, and has left me in good stead to deal with the larger game of life. So one little medal, but a lot attached to it. Neeraj, आप कहाँ थे 2008 में जब अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता? कितने साल के थे? नमस्ते सभी को। मैं बताना चाहूँगा कि मुझे सच बताऊँ तो कुछ था ही नहीं कि मैं जब तक स्पोर्ट करूँगा कि नहीं। गांव में था और स्कूल में जाते थे उस टाइम, पर स्पोर्ट्स का कुछ नहीं पता था। तो मुझे सच बताऊँ तो उस टाइम मैं ओलंपिक को फॉलो भी नहीं कर रहा था। जब मैंने शुरू किया कुछ टाइम बाद पता लगा कि अकेले इंडिविजुअल ऐसे एथलीट हैं इंडिविजुअल स्पोर्ट के जिनके पास गोल्ड है, और बड़ा प्राउड फील होता था कि मतलब कि सर अकेले एक ऐसा एथलीट है। और फॉलो करने के लिए हम सभी ने काफ़ी कोशिश की थी, मतलब बाकी सभी एथलीट कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई साल से हो नहीं पा रहा था। लेकिन सर का भी एक बहुत बड़ा मैंने देखा था कि ट्विटर पे पढ़ा था कि ये इनके मन से एक था कि भाई फॉलो करेंगे टोक्यो में हमको, और मतलब और गोल्ड आ सकते हैं। हाँ। तो वो जब जीता तो सबसे पहले तो मैंने बोला था कि मिल्खा सिंह जी का एक वो मुझे याद आई थी, और सर का अकेला गोल्ड था। फिर ऐसा फील हुआ था कि नहीं, हमारे अंदर भी वो चीज़ है, हम भी कर सकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये सिलसिला बना रहेगा। तो आप सर के बारे में कब जाने? बाद में जब आप फील्ड पे आए तब? हाँ, जब काफ़ी साल बाद जब मैंने शुरू किया, जब मैं एथलेटिक्स के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स फॉलो करने लगा, तब मुझे सर के बारे में पता लगी कि अकेले हमारे ऐसे एथलीट है जिनके पास गोल्ड है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लगती थी। और आप उनसे मिले थे टोक्यो जाने से पहले? नहीं, मैं सर से फर्स्ट टाइम मोहाली में मिला सर, है ना? फर्स्ट टाइम मोहाली में मिला था मैं तो 2018 में एशियन गेम्स के बाद। टोक्यो के बाद भी मिला। टोक्यो के बाद मिलके क्या किया आपने? सबसे पहले तो सर ने बोला था कि मैंने 10 साल से अपने मेडल को छुआ नहीं है, वो मेडल निकलवाया मैंने, क्योंकि मेरा भी टोक्यो का मेडल मेरे पास था गोल्ड, और सर का भी, क्योंकि
इंडिया में 2 ही ऐसे मेडल है, तो मैंने बोला सर प्लीज़ मैं इन दोनों को एक बार फील करना चाहता हूँ। तो सर थोड़ा ऐसे लग रहे थे कि ये पसंद नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि सच बताऊं तो मेरी भी एक ऐसी आदत है कि मैं अपने मेडल को अभी रख दूंगा और मैं चाहता हूं कि अभी अगले टारगेट पे नज़र रखूं। तो सर का भी ऐसे मुझे फील हुआ कि इनको वो चीज़ पसंद नहीं है कि एक बार जीत लिया बार बार उसी चीज़ को ऐसे दिखाते रहे कि मैंने गोल्ड जीता। ये बड़े काम जो है मैंने देखा है, बड़े काम हैं। तो मैंने बोला कि सर प्लीज़ आप निकालो, तो थोड़ा मैं भी शाय फील करता हूँ। सर मुझसे भी ज़्यादा शाय लगे मुझे कि ऐसे कैसे पोज करना है मेडल को लेके, नहीं मुझे नहीं पता ऐसे, मतलब वो काफ़ी शाय लग रहे थे। लेकिन बहुत अच्छा लगा उस दिन, मैं जब दोनों मेडल को ले रहा था और मैं बोल रहा था कि ये दोनों 2 ही हमारे पास मेडल है इंडिया में और दोनों आज मेरे हाथ में है, तो बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन।